Sand mafia struck fear once again in Nilagiri region of Baleswar district on Thursday after a violent face-off with police that turned dangerously hostile. According to police sources, a tractor loaded with illegal mined sand was seized and being taken to Ajodhya police outpost when a gang of 25 mafia members launched a daring ambush. In a shocking act, one constable from the Anti-Patrolling Response APR unit was held at knife point while the gang hijacked the seized tractor. The police officers were later thrown off the moving vehicle, allowing the mafia to flee with the tractor. The incident has once again highlighted the alarming rise of lawlessness by sand mafias operating in broad daylight. Junior mining officer of Nilagiri, Jitendra Das, who filed a report at the Ajodhya outpost, confirmed that this was not an isolated incident. Just days earlier, he was physically assaulted by the mafia during a raid on an illegal mining site. Despite ongoing crackdowns, the sand mafia continues to operate with bold defiance, raising critical concerns about enforcement gaps and the safety of officials on duty. आज एनफोर्समेंट ड्यूटी आसलु बालेश्वर बाहर सकाଳେ 4टा बेले आसला आम दीटा गाड़ी सीज करथु प्रथम गोटे टिपर सीज करथु होची रेमणा पाखा पाखिरो मित्रपुर जाउतला आउ सेटा पाखा हला मित्रपुर यो रेमणा बोली हम रेमणा थाना दे दिलु तापरे होची हमें यो नीलगिरी एरिया रो टिके एनफोर्समेंट करथुलु सेटी गोटे होची हाईवा धरतिलु होची माने 16 14 चिया ना अच्छा धरतिलु ताको दे दिलु नीलगिरी थाना देसला पर नीलगिरी आईएसी हम कहले गले जे गोटे कंप्लेन थिला हमें ओबता जीवा प्रोग्राम थिला हमरो आ होची किंतु कहले जे गोटे कंप्लेन थिला होची आपन टिके जातु स्टाफ नै की देखिए सेटी कोन काम होची आ हमें आसिलु आसला पर होची सेटी गोटे ट्रैक्टर माटी उइती बे जो नदी पठारु पुराना गां नदी पठारु माटी ताडली 8-10 जन लेबर ताड़ी लोड करथले माटी ना बाली सर बाली उइती माटी रब बाली अच्छा नदी पठार पुरा हमें होची ट्रैक्टर टाको सीज कलु सीज कला पर होची स्टिकर गाड़ी गली गला तापर ताको उठे उठा के नै गलु